So this today's my topic is acute renal failure. Myself Vijay Solanki, nursing tutor and Dex Nursing College. ठीक है, आज का टॉपिक है अपना एक्यूट रिनल फेल्यूर्स पे, जो कि सडनली किडनी फंक्शन करना काम करना बंद कर देती है। तो एक्यूट रिनल फेल्यूर्स एक्चुअल में होता है क्या, ये देख लेते हैं। कंडीशन इन विच द किडनी सडनली कांट फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, एक्यूट रिनल फेल्यूर्स डेवलप रैपिडली ओवर अ फ्यू आवर्स और डे. It might be fatal. It is most common in those who are critically ill and already hospitalized. ठीक है, सिम्टम्स किडनी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। मेनली क्या होता है, किडनी का फंक्शन जो है वो अनरप्टेड हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर किडनी फंक्शन काम करना बंद हो जाती है, जिसके कारण कि पेशाब में यूरिन आना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सिम्टम्स रिक्वायर्ड मेडिकल डायग्नोसिस। सिम्टम्स इंक्लूड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, swelling due to fluid retention, nausea, fatigue, and shortness of breathing. Sometimes your symptoms might be substantial or might be superior to all. Acute kidney failure. Kidney failure occurs when your kidney suddenly become unable to filter waste product from your blood. When your kidney lose their filtering ability, ठीक है, dangerous level of waste might accumulate and your body chemicals makeups might get out of balance. ठीक है, acute kidney failure, also called acute renal failures, or acute kidney injuries, develops rapidly, usually in less than a few days. Acute kidney failures is the most common people who are already hospitalized, particularly in the critically ill peoples who need intensive care. Acute kidney failures can be fatal and require intensive treatments. However, acute kidney failures might be reversible if you otherwise in the good health. You might recover normal of nearly normal kidney functions. Symptoms हमने अभी देखे थे। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ किडनी फेल्यूर्स में इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें हो सकती है किडनी फेल्यूर्स में, कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले डिक्रीज यूरिन आउटपुट्स, आल्थो ऑक्शनली यूरिन आउटपुट रिमाइन नॉर्मली यूरिन आउटपुट से बहुत कम यूरिन आउटपुट हो जाएगा, डिक्रीज कम हो जाएगा यूरिन आउटपुट, सबसे पहली चीज़ होगी। फ्लूइड रिटेंशन कॉजिंग स्वेलिंग्स इन द लेग्स, एंकल्स और फीट, सूजन आ सकती है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, थकावट महसूस होगा, कन्फ्यूजन्स, नोजिया, वीकनेस, इरेगुलर हार्ट बीट्स, चेस्ट पेन और प्रेशर, सीजर्स और कोमा इन द सीवियर केसेस। कॉज एक्यूट किडनी फेल्यूर कैन ऑक्योर व्हेन, किस चीज़ के कारण ये चीज़ें हो सकती है। यू हैव अ कंडीशन दैट स्लो ब्लड फ्लो टू योर किडनी, यू एक्सपीरियंस डायरेक्ट डैमेज टू योर किडनी यूरिन ड्रेनेज ट्यूब्स, ureters becomes blocked and wasted can leave you body through your urine, impaired blood flow to the kidney। ठीक है, impaired disease and condition that might slow blood flow
to kidney and lead to kidney injury includes blood or fluid loss, blood pressure, medications, heart attack, heart disease, infection, liver failure, use of aspirin, ibuprofen, Advil, Motrin, IV others, naproxen, sodiums, or others related to drugs. Severe allergic reaction, anaphylaxis, severe burn, severe dehydration, damage to kidney. एक कारण डैमेज भी हो सकता है. This disease conditions and agents might damage to kidney and lead to acute kidney failures. ठीक है. Blood clots in the veins and arteries in and around the kidney, cholesterol deposits that block blood flow in the kidneys, glomerulitis, it is inflammation of tiny filter in the kidney, hemolytic uremic syndromes, a condition that results from premature destruction of red blood cells, infection such as with the virus that cause coronavirus disease, infections such as with a virus that cause coronavirus disease 2019. This is COVID-19. Lupus and immune system disorders causing glomerulitis, medications such as certain chemotherapy, drugs, antibiotics, and day-use drug, imaging test. ठीक है. Scleroderma and group of rare disease affecting the skin and connective tissues. Thrombotic thrombocytopenia purpose rare blood disorders. Toxics such as alcohol, heavy metals, and cocaines. Muscle tissues breakdown that lead to kidney damage caused by toxin from muscle tissues, destructions, breakdown of tumor cells, tumor lysis syndrome, which lead to release of toxin that can be used to kidney injuries. Urine blockage in the kidney. ये भी cause of the disease and condition that block the passage of urine out of the body. Urine obstructions and can lead to acute kidney injuries include bladder cancer, bladder clots in the urinary tract, cervical cancer, colon cancer, enlarged prostate, kidney stones, near damage involving that nerve that control the bladders, prostate cancer. रिस्क फैक्टर्स देख लेना है किस किस चीज़ से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जो कि डैमेज करते हैं किडनी को. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें होती है जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किडनी, एक्यूट किडनी फेल्यूर्स. ठीक है. एक्यूट किडनी फेल्यूर almost away occur in the connective with another medical condition or events conditions that can increase your risk of acute kidney failures. Always occur in the connections with another medications conditions or events condition. बहुत सारी ड्रग्स भी इफेक्ट कर सकते हैं एक्यूट किडनी फेल्यूर्स को. ठीक है.
began hospitalized specially for a serious condition that require intensive care, advanced age, blockage in the blood vessels and your arms or legs, diabetes, high blood pressures, heart failures, kidney disease, liver disease. ठीक है, certain cancers and their treatments. ये रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं. There is more types of risk factors of kidney failures like diabetes, किसी को शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट फेल्यूर्स है, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, सर्टेन कैंसर्स. ठीक है, मेन योगदान रिस्क फैक्टर्स ऑफ किडनी फेल्यूर्स. ठीक है, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ेगा. हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेल्यूर, डायबिटिक्स. ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं इसकी. प्रोटीन potential complications of acute kidney failures include fluid buildup. Acute kidney failures might lead to a buildup of fluid in your lungs which can cause shortness of breath, chest pain. If the lining that cover your heart pericardium become inflamed, you have my experience chest pain. Muscles weakness when your body fluids and electrolytes your body blood chemistry are out of balance. Muscles weakness can result. ठीक है, permanent kidney damage. Occasionally acute failure cause permanent loss of kidney functions or end stage renal disease. People with end stage renal disease require either permanent dialysis, a mechanical filtration process used to remove toxics and waste from the body, or kidney transplantation to survive. डेथ भी हो सकती है. Acute kidney failure can lead to loss of kidney functions and ultimately death. Preventions. तो जल्दी टॉपिक ख़त्म हो गया अपना. प्रिवेंशन पे आ गया अपन कि प्रिवेंशंस देख लेते हैं. इसके प्रिवेंशन बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों में अपन को. ठीक है, हमने सारी चीज़ें देखी. कॉम्प्लिकेशन, रिस्क फैक्टर्स, कॉजेस. ठीक है, अब प्रिवेंशन देख लेते हैं. प्रिवेंशन में हम देखेंगे प्रिवेंशन. acute kidney failures is often difficult to predict or prevent, but you might reduce your risk by taking care of your kidney. Try to pay attention to label when the taking over the counter OTC pain medications. Follow the instructions for OTC pain medications such as aspirin, acetaminophen, ibuprofen, Advil, Motrin, IV others, and naproxen sodiums. Others taking too much of these medications might increase your risk of kidney injuries. This is especially true if you have pre-existing kidney disease, diabetes, or high blood pressures. Work with your doctors to manage kidney and other chronic conditions. If you have kidney disease or another conditions that increase your risk of acute kidney failures such as a diabetic or high blood pressure, stay
on attack with the treatment goals and follow your doctor's recommendations to manage your conditions. ठीक है. Make a healthy lifestyles priority. Be active, eat sensible, balanced diet, and drink alcohol only in moderation, if at all. Diagnosis or treatment. Diagnose करते हैं. Diagnosis. If your sign and symptoms suggest that you have acute kidney failure, your doctors might recommend certain tests and procedures to verify your diagnosis. This might include urine output measurement, measuring how much you are urinate in 24 hours, might help your doctors determine the cause of your kidney failures. Urine test, analyzing sample of urinalysis might reveal abnormalities, suggest kidney failures. Blood test, a sample of blood might reveal rapidly rising level of urea and creatinine, two substances used to measure kidney functions. Imaging tests such as ultrasounds, computed tomography might be used to help your doctors see your kidneys. ठीक है. Removing a sample of kidney tissues for testing. ठीक है. यूरिन टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट से पता लगाएंगे. ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें कि यूरिया देखेंगे, यूरिया का लेवल, क्रिएटिनिन का लेवल. सीटी स्कैन कराएंगे जिससे मैं किडनी का साइज से देख लेंगे. फिर रिमूविंग ऑफ बायोप्सी होगी, टेस्टिस. इज द सिचुएशंस योर डॉक्टर्स माई रिकमेंडेड ए किडनी बायोप्सी टू रिमूव ए स्मॉल samples of kidney tissues for lab testing. Your doctors inserts a needles through your kidney and into your kidney to remove that samples. ठीक है, हमने देख लिया. सीटी स्कैन करा सकता है, किडनी बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड्स. नेक्स्ट ट्रीटमेंट देख लेते हैं. ट्रीटमेंट्स फॉर एक्यूट किडनी फेल्यूर्स typically required a hospital stay. Most people with the acute kidney failures are already hospitalized. How long your stay in the hospital depends on the reasons for your acute kidney failures and how quickly your kidney recovers. In some cases, you might be able to recover at home. ठीक है. Treatment the underlying cause of your kidney. Treating the underlying cause of your kidney injuries. Treatment for acute kidney failure involve identification of illness or injury that originally damaged your kidney. Your treatment options depend on what causing your kidney failures. Treating complications until your kidneys recover. Your doctor will also work to prevention complications and allow your kidney time to heal. Treatments that help prevent complications includes treatment to balance the amount of fluid in your body. If your acute kidney failure is caused by a lack of fluid in your body, your doctors might recommend intravenous IV fluid. ठीक है. In other cases, acute kidney failures might cause you to have too much fluid leading to
swelling in your arms and legs. In this case, your doctors might recommended medication diuretic to cause your body to expel extra fluids. बॉडी में अधिक स्वेलिंग है तो हम ड्रग डाययूरेटिक देंगे, जिसके कारण कि एक्स्ट्रा फ्लूइड जो जमा हुआ है बॉडी में, स्वेलिंग में यहाँ पे जमा होता है, स्वेलिंग में एक्सेसिव फ्लूइड जमा होता है, तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसलिए अपन डाययूरेटिक ड्रग्स देंगे पेशेंट को, सबसे पहली चीज़। ठीक है। सेकंड, मेडिकेशन टू कंट्रोल ब्लड पोटेशियम। इफ़ यू किडनी आर properly filtering potassium from your body, from your blood, your doctors might prescribe calcium, glucose or sodium polystyrene sulfonate ketosis. This prevent to accumulations of high level of potassium in your blood. Too much potassium in the blood can cause dangerous irregular heartbeats, rhythmic and muscles weak. ठीक है। मेडिकेशन टू रिस्टोर ब्लड कैल्शियम लेवल। if the level of calcium in your blood drop to low, your doctors might recommended an infusion of calcium. इसके बाद हम डायलिसिस, मेन जो प्रोसेस होती है बॉडी टॉक्सिक्स को बाहर निकालने, जो किडनी फंक्शन करता ही नहीं है, तो मेनली यही चीज़ें होती है डायलिसिस, टू रिमूव टॉक्सिक फ्रॉम द योर ब्लड। जो वेस्ट पदार्थ होते हैं यूरिन में, वो डायलिसिस के थ्रू हम बाहर निकाल सकते हैं। टॉक्सिन build up in your blood. You might need temporary hemodialysis, often referred to samples as dialysis, to help remove toxins and exchange fluids from your body. When your kidney heals, dialysis may also help remove excess potassium from your body. During dialysis, dialysis machine pump blood out of your body through an artificial kidney dialyzer that filter out waste. ठीक है। The blood is then returned to your body. जैसे कि हमने देखा किस किस चीज़ से हम पता लगा सकता है किडनी फेल्योर का। यूरिन आउट कैसे पता लगा, सिटी स्कैन करा सकते हैं, हेमोडायलिसिस करा सकते हैं, किडनी बायोप्सी कराएंगे। लाइफ स्टाइल्स एंड होम रिकमेंडेशन। ठीक है। ड्यूरिंग योर रिकवरी फ्रॉम एक्यूट किडनी फेल्योर, योर डॉक्टर्स माई रिकमेंडेशन स्पेशली diet to help support your kidney and limit the work the most. Do your doctors might refer your dietitians who can analyze your current diets and suggested way to make analyzing your current diets and suggest way to make your diets easier to your kidney. Depending on your situations, your dietitian might recommended that you choose lower potassium foods, avoid production with the added salts, limit phosphorus. ठीक है। लोअर पोटेशियम फूड खाना। योर dietitian might be recommended that you choose lower potassium foods. High potassium foods include beans, orange, potassium, potato, spinach and tomatoes. Explain examples for low potassium foods include avoid product with the added salt. ठीक है।
low the amounts of sodium you eat each day by avoiding product with the adult salt includes my converse foods such as the froze dinners cans। ठीक है, अपन को कम से कम नमक का उपयोग करना है या करना ही नहीं है। ठीक है, just complete these topics। Thank you।